Assalamu alaikum. This is Amna here live from TBC Talks. I hope you all are doing great and are safe and sound. And before I start today's session, I would like to state that while conducting this whole session, we have followed and kept each and every possible SOP at our workplace. So let's start this wonderful session on time management for working mothers. So today with us, we have an amazing personality, Ms. Raeda Latif, who is Head of Marketing and Business Development at Pakistan Stock Exchange. So let's welcome her. Assalamu alaikum ma'am. How are you? ठीक ठाक। और क्या हाल चाल है? बस अल्लाह का शुक्र है, काम चल रहा है। Okay. So ma'am, first of all, thank you so much for being a part of TBC Talks. And I'm really looking forward to a great session with you today. इंशाल्लाह। Okay. So the very first question is the very basic one actually. That kindly tell us about yourself. Who is Raeda Latif? About myself, I would say, जिस तरह शेक्सपियर ने कहा, every person is an actor who has personalities. Life is a stage. Yeah. So and we play different roles. So on one side, which is very visible to everybody, is the career side. So I'm a mother. I'm a professional. And obviously I'm a family member, I'm a sister, daughter and wife. I would say that's how I define myself. Mashallah, playing a quite a diversified role in your life. Trying to juggle everything and balance it out. Okay. So ma'am, the second question is that since you are a working lady and a mother yourself, so kindly tell that how important it is to manage the whole phenomena of the time. Especially जब आप काम कर रहे होते हैं तो I think it's very organizing, managing, prioritizing, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो जाती हैं। तो आप टाइम, आपके पास अपने डिस्पोजल पर टाइम नहीं होता है, आपको टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना होता है to get the maximum out of it also. So yes, as I said, it's a balancing act. And मदर प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। And time to time tackling सब चीज़ें। जी हाँ, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपको पता हो कि आपने पहले से अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हैं, ताकि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ताकि कब क्या चीज़ आनी है, यू रेडी फॉर इट एंड यू नो हाउ टू टैकल इट, बजाय इसके कि जब चीज़ आए उसके बाद आप सोचेंगे अब इसको किस तरह मैनेज किया जाए। Okay, so being a mother and a working lady, much a successful working lady, so one needs to be proactive, obviously. Proactive. Okay. So how do you manage time wisely as being a busy working mother? Obviously, अगर हम compare करें like 10 years before and now, the working mother and working lady, तो obviously इन्होंने ये जब टेक्नोलॉजी इन्होंने पूरा डायनेमिक्स ही चेंज कर दिया है। Definitely, in fact, technology has really helped us. Especially in कोविड का अगर आप देखें, कोविड के टाइम में क्या हुआ, लॉकडाउन्स हुए बट काम चलता रहा, स्कूलिंग घर से हो गई, काम डबल हो गया। बट अगेन ऑन द पॉजिटिव साइड एक चीज़ प्रूव हो गई कोविड से कि जो पार्ट टाइम या वर्क फ्रॉम होम, जो कि पाकिस्तान में समझते नहीं थे लोग के, एक खातून जब काम करने जाती थी और अगर उन्हें लीव चाहिए या कुछ, वो कहते नहीं हम लीव नहीं दे सकते, घर से क्या काम करेंगे, वो सोच ही नहीं सकते थे। एटलीस्ट कोविड ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि वर्क फ्रॉम होम इज़ एन ऑप्शन, बीइंग ऑनलाइन फ्रॉम होम इज़ एन ऑप्शन। वरना तो सिर्फ एक या तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ एक्सेप्टेबल थी या टेक वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल थी। तो अब ये कि ऑन एन एवरेज नॉर्मल कन्वेंशनल बिजनेसेस ने भी इस चीज़ को रियलाइज किया कि नहीं, इट्स पॉसिबल। सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग दैट आई वुड से। एंड आई थिंक because of this pandemic, our each and every individual's mindset has totally changed. As being a student, I have seen that हम लोग भी कहते थे ऑनलाइन क्या होता था, वो प्राइवेट स्टडीज होती थी। हम लोगों ने खुद, आई हैव माई सेल्फ कम्प्लीटेड माई MBA ड्यूरिंग दिस होल पैंडेमिक। सो वी नो दैट जो काम अब माइंडसेट हमारा चेंज हुआ है, वी आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर द न्यू लाइफ। द फिनोमेना हैज टोटली चेंज्ड. Now we cannot go back like an year before, how things were before pandemic. Now we are ready for the new change and new things.
जहाँ जैसे पहले ज़माने में ऑफिस में अटेंडेंस होती थी तो आपने साइन इन किया, साइन आउट किया, इसका मतलब है आपने वो 8 घंटे या 10 घंटे काम किया, चाहे आपने एक्चुअली काम किया और नहीं किया। कोविड के अंदर ये चीज़ की एक ट्रांसपेरेंसी भी आ गई कि जी प्रोडक्टिविटी को किस तरह गेज किया जाए, चाहे वो अटेंडेंस लगे या ना लगे, यू नो ऑल दैट. सो आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव थिंग एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन अ मेजर ड्राइवर, कैटलिस्ट इन दिस चेंज. Had we, I would say 10 years before, had we gone into COVID, ये चीज़ें possible नहीं होती. इनफैक्ट पाकिस्तान काफ़ी चलता रहा है, दुनिया के दूसरे ममालिक भी, बट पाकिस्तान हैज़ बिन लाइक रनिंग स्मूथली. हमारे ऑफिसेज वर्क हैज़ बिन रनिंग स्मूथली. सम थिंग्स हैव चेंज्ड, कहीं कहीं हुई हैं इशूज लाइक बिजनेसेस इन द सर्विस सेक्टर लाइक रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, बट अदर देन दैट डिलीवरीज है, होम डिलीवरी के ऑप्शन है. So you know all that has been, I think, with technology has been smoother and easier. There were difficult times for each and everyone, I would say. But during this pandemic, we have created opportunities as well. There are many business are on the road right now, which nobody has thought an year before. Yeah. So hard times come, but along with it, many opportunities are created with us. So, ma'am. Do you ever think that do you ever find balancing your work and professional life a little hard in your life? It's very tough. It's very tough because at times आपकी work responsibilities होती हैं, आपकी deadlines होती हैं, आपको कुछ ऐसे काम करने होते हैं. Sometimes it's the time of the year, for example budgeting है, all that. कोई नया project है जिसका launch होना है. And time is very critical in that, and that is the time when you actually look around you to the immediate family circle, your friend circle, to help you and give you that balance support, ताकि आप वहाँ वो कर लें. On the other hand, अगर कभी ऐसा time हो कि आपके बच्चे की तबीयत सही नहीं है, so that is needed. You are needed over there. And that is when you reach out to your office and your colleagues and say, you need to hold the forte while I have this to attend to. So I think ये होता है off and on, but normal days में अल्लाह का शुक्र है, it's been balanced quite all right. It goes smooth. Like a working mother has to be alert all the time. वो किसी वक्त सो नहीं सकती from that angle. आप क्योंकि once you're a mother, you have that थिंग कि आप मुस्तकिल अपने बच्चे को चेक कर रहे होते हैं, चाहे वो रात हो, बीच में भी आप उठ के चेक कर रहे होते हैं कि उसको कवर किया हुआ है, उसने सही या नहीं, ऑल दैट. एंड दिन में you have to be up and about, and you have to have your priorities right. यहाँ I would say कि ये एक हेडेक ले लेते हैं हम बिकॉज हमें काम करना है. तो and especially corporate sector में काम करना है. Not to say that a working mother does a non-working mother doesn't work. She's working. She in fact मैं तो चले मेज पे बैठ के दिमाग से इस्तेमाल करके काम कर रही थी, but a mother who's a full-time mother, I'm a part-time mother from that angle, मैं कहूँगी. But a mother who's a full-time mother, she has to be there. She's there with the child. बच्चा रोता है, बच्चा सोता है, खाना खा रहा है, तो वो तो अटेंशन ही रहती है. तो कुछ इस किस्म की जॉब्स हैं, लाइक इवन अ टीचिंग जॉब, सारा दिन 20 बच्चे 15 बच्चों को डील करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब. कॉर्पोरेट लाइफ, यस वी हैव आवर ओन प्रेशर्स, वी हैव आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट उसकी अपनी चैलेंजेस हैं. सो आई थिंक अ मदर इज ऑलवेज वर्किंग, वेदर शी इज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर और अदरवाइज. सो मगर you don't get to sleep in one stretch. You have to keep planning. You have to make sure कि जी आपकी ऑफिस में भी you don't fall behind anybody. You don't want to give excuses. And women have this, I would say, एक innate हमारी वो होती है कि नहीं, हमने we can't say no, or we can't be mess up things, you know. तो और हमारा गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो बच्चों के लिए गिल्ट हो, चाहे वो फैमिली का गिल्ट हो, चाहे वो वर्क प्लेस का. हम लोग बहुत सेल्फ क्रिटिकल होते हैं. वुमेन आर दैट वे, दे आर वायर्ड दैट वे. तो अगर वो इन्वेस्टमेंट्स में भी गलती कहीं होती है, लॉस हो गया, तो वो कहती है नो, ये कैसे कर सकती हूँ मैं, हाउ कैन आई, शी होल्ड्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल. वेयर इज अ मैन विल से अच्छा चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट.
Yeah. So they easily put things behind. Women don't. Totally agree. So इसीलिए वो bold decisions लेने में भी बहुत ज़्यादा सोचती है, whereas men take bold decisions very easily. So coming back to your thing, if you're a working person and a mother, you're always functioning. Your planning doesn't stop really. And I think once you become a mother, there's no ending to it. No. अभी तक तो मुझे तो कहीं नहीं लग रही. There's no ending to it. I think I've seen my mother, like she has been waking up for my elder brother from day one, and now still it's an ongoing process. And I'm like, oh God, the same thing that you said. The working women are they do get appreciated, but what about the our mothers, the women who are working at our homes? True. They are not really much appreciated, and actually they are working 24/7. Yeah. They are already on a non-working vacation or what I say, but it's really hard. Being a mother itself is really hard, and being a mother along with a working woman, I think it's really to take on, and you have to be really proactive in order to do so. Yeah, to manage well. To manage well, great. I'm taking some notes, really. So strong. Okay, so describe how do you manage stress at work? This is really something that we need to learn. Yeah, I think it's most important. Stress किस लिए आता है? स्ट्रेस इसलिए आता है कि अच्छा जी कोई चीज़ सही नहीं जा रही है, तो स्ट्रेस लेने के बजाय you have to stop and break down that whole situation into parts. Where is the issue? How do you fix that issue? How do you move on? What are the alternative options? So अगर आप बैठ के स्ट्रेस लेते रहें तो स्ट्रेस लेना is not a solution. Yeah, exactly. Okay? So you need to find the solution. What I do is I try to stop and think, breathe, and say, okay, let's break down the problem. कहाँ से आया, क्या वजह थी, कैसे उसको सॉर्ट करें, आगे कैसे बढ़ें, क्या alternatives हैं, other options क्या हैं. So you are good at coping. Damage control किस तरह किया जाए. So you are good overall with this. I think after 20 years आपकी आदत हो जाती है. I think with time आपका चीजें देखने का नजरिया, हर चीज देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है. पहले शुरू में ही होता था कि I would panic कि ओ ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा. I'm in this stage right now. So I think after that and आप अपने सीनियर्स से सीखते हैं, चाहे वो मेल सीनियर्स हैं, चाहे वो फीमेल सीनियर्स हैं, कोई ना कोई होता है जो उस वक्त आपको कहता है कि नो हैंग ऑन, यू नीड टू स्टॉप एंड यू नीड टू, एंड एक दफा ऐसा होता है, 2 दफा ऐसा होता है, उसके बाद देन यू स्टार्ट कंडीशनिंग योरसेल्फ के ओके, एंड देन इवेंचुअली आप इस मोड में आते हैं कि आप अपने जूनियर्स को सिखा रहे होते हैं. सो आई थिंक ओवर द लाइफ एज इयर्स पास बाय यू लर्न दीज थिंग्स, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो टू एक्चुअली गिव आउट information and help others also. To learn and give back to the society. Exactly. Right. So how can a working mother make life easier? I would say guilt ना ले, सबसे important चीज. Yeah. Because the more you blame yourself and feel guilty, you're wasting time. बजाय इसके try and take out those little spaces within your time, dedicate that time. आज भी I would say देखिए with technology, especially with the mobile phone, you're WhatsApping, you're Facebooking, you're Instagram, क्या हम professionally LinkedIn देख रहे होते हैं, हम Twitter देख रहे होते हैं business के perspective से. It's very important कि आप अपना टाइम इस तरह मैनेज करें कि एक दफ़ा आपने वो किया तो थोड़ा लीव योर फोन, स्टॉप थिंकिंग अबाउट वर्क एंड जस्ट बी देयर इन द मोमेंट विद योर फैमिली. कई एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी एडिक्टिव. सो कई मतलब ऐसा होता है कि मैं फ़ोन पे हूँ, मुझे इसको जवाब देना है, मुझे किसको जवाब देना है, मुझे व्हाट्सएप पे भी देखना है एंड एक ईमेल का भी जवाब देना है, माई चिल्ड्रन आर अराउंड मी एंड दैट इज व्हेन आई से स्टॉप, पुट दिस अवे. After a few hours, I'll respond. Nobody's going away. This is not the end of the world for anything. कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है कि कोई मर रहा है या कोई इमीडिएट वो है, कोई लाइफ सिचुएशन है, लाइफ थ्रेटनिंग. So let's just put it aside and we will look at it in the next few hours. And if you're there, you might as well be there. And this is something, in fact, जब काम चल रहा होता है तो और मैं पर्सनल लाइफ में जब वो
परमिएट करता है काम, तो वो मुझे बहुत बॉदर कर रहा होता है बिल्कुल कि अपने आप को नहीं रोक पाते हम कि उसको स्विच ऑफ करा जाए. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट, स्पेशली व्हेन योर चिल्ड्रन आर यंगर, बिकॉज दे लुक एट यू एज रोल मॉडल्स. In fact, एक दो दफ़ा तो literally ऐसा हुआ है that my daughter is talking to me, she comes and then she says, "Mama, please put your phone away, put your phone off." और ये वो जुमला है जो मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए कभी कभार यूज़ करती हूँ, put your phone off, we're having food. We're at the table, put it off, इधर लाओ, मैं अपने पास ऑफ करके रखती हूँ. एंड एक दफ़ा या दो दफ़ा ऐसा हुआ कि I came to the table and I was talking to my little one, and while I was on the phone, and she actually used that sentence on, at me, "Mama, put your phone off." And then I said, okay, I better do it. Yes, okay. And then I put it away, I put it off, and I spend that time actually listening to her. So I think हमारे बच्चे भी realize कर रहे हैं और हमें भी करना चाहिए कि हम किस तरह टाइम को बैलेंस करें और उस टाइम. These are the little things that helps the most in balancing each and everything you are doing in your life. Being a mother, being a colleague, there are many roles that we women are actually playing at a time. So one must live in the moment and focus on where he is at the moment. प्लस और दूसरी और चीज़ जो आपकी टाइम की बात की ना, उसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोल ऑफ योर अदर फैमिली मेम्बर्स. स्पेशली इफ आई एम अ वर्किंग मदर, तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट जो फुल टाइम मदर्स होती हैं वो करती हैं और जो मैं नहीं कर पाऊँगी. बट एट दैट पॉइंट आई थिंक उससे होता क्या है कि मे बी इफ इट्स अ फुल टाइम मॉम जो but when it's a working mother, the children help, and then you also start delegating responsibility. Your husband also chips in a bit more. So the entire family unit coordinates more, is more closer because they're working in sync. So I think that's one of the positive things that a working mother brings. Unless कि हाँ जी घर में मेजर फटा है कि जी अम्मा काम ना करें लेकिन अम्मा काम कर रही हैं, that उससे अगर आप हट जाएं तो आप ये देखें कि the family unit becomes more cohesive and coordinated. More understandable. And even the kids are contributing. And बच्चों में empathy ज़्यादा होती है. ऐसे बच्चों में empathy ज़्यादा होती है because when they see अच्छा अम्मी थक के आई हैं, तो then they might even हिल के do something. But otherwise बच्चे हिलते नहीं होते. They used to the mothers coming and serving them and each and everything. So especially in our desi households. In the desi households, totally. So I think there हर किसी के जैसे जो हमारे घर में होती है हमारी अम्मियों ने जिस तरह they have been homemakers, तो उनकी लाइफ का पर्सपेक्टिव अलग है. लेकिन हाँ as time is changing and people are we women are more balancing our home plus our offices and each and everything. I think हम लोग को ज़्यादा समझ में आ रही है. We are becoming more empathetic. और हमें समझ में भी आ रहा है कि हाँ there is more purpose to our life. And the fathers are also better, more involved in the family. I think 10, 15, 20 years ago अगर आप देखें तो fathers को usually पता नहीं होता था कि जी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं कौन सी क्लास में. But at least now things are different. And I think the more women come into the workforce, चाहे वो half day job करें या full day करें, whatever, when they start working तो the fathers also say अच्छा okay चलो थोड़ा मैं कर देता हूँ, ये मैं देख लेता हूँ. There's a division of responsibilities also. अब जैसे women are also getting into on the boards. अब वो भी अब मेंटालिटी आदमी की समझ रही है कि ओके पहले माइंडसेट क्योंकि बिल्कुल नो हाउ नहीं होती थी औरत घर में आदमी बाहर. ठीक है, अब औरतें भी समझ रही हैं ओके सो दिस इज हाउ the whole corporate life works. Men always thought कि अच्छा इनको तो समझ ही नहीं आता हमारे प्रॉब्लम्स की. नहीं, दूसरा ये भी है कि जी how can I talk to my wife, she doesn't know. Today a working woman's husband can also talk and discuss his own office, environment, business के issues with his wife because now he knows that she understands. She knows more about how the work life they can correlate now at every level. तो वो आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है. बिल्कुल, बहुत सारे इसके फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे फेवर्स लेने पड़ते हैं फैमिली से, which at times friends say, so that kind of thing. Yes, but then I think
on the overall अगर आप देखें तो even if it's a housewife, she'll also ask people for help and so then फिर आपको you know, you have to sit back and say no, it's nothing that bad, it's not all that bad. So yeah, and कभी कभार ये लगता है कि oh, why am I doing this, why am I pushing myself, so you know, इस तरह की चीज़ें होती हैं. These are real life वो challenges. फिर बच्चों की आपको लगता है कि आप उधर हैं नहीं, आप तरबियत सही कर रहे हैं कि नहीं. So ये प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली अगर मेजॉरिटी बच्चे आपके बच्चों की जो फ्रेंड्स हैं और सर्कल है उनमें मेजॉरिटीज मदर्स आर एट होम. तो वो जो बच्चों के सवाल होते हैं ना कि जी ओहो दे गो देयर मदर्स देयर, यू आर नॉट देयर, या दे फील एट टाइम्स के यू नो आवर मम्स नॉट देयर, वी तो हम तो शाम को मिलते हैं अपनी अम्मी से. एज व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, दे आर, यू नो, सो आपको उस वक्त उन्हें समझाना होता है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू वर्क. इट्स नॉट जस्ट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इट्स अबाउट यू स्टडिंग, यू बिकम एन इंजीनियर, उसके बाद और अ डॉक्टर और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, यू नो, एन आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, एंड देन यू जस्ट स्टॉप. You stop exploring and you just stop. And you just stay home. Is that why you spend so much money? And is that what you really wanted? What about is that your what ambitions? defines you? So, and then you know your children start thinking differently. Plus, if you have sons, then they are more adaptive and open to things. वरना जनरली हमारा जो पुराना कल्चर होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते हैं. बिल्कुल. कपड़े इस्त्री करना, ओह ये तो औरतों का काम है. खाना पकाना, ओह ये तो औरतों का काम है. अब वो चीज़ डिफरेंट हो गई है. पैंडेमिक में कितना so you know all that is now changing. पैंडेमिक में मेड्स भी नहीं थी, तो बहुत सारा काम डिवाइड करना पड़ा. remember that time. So yeah, बहुत सारा काम शेयर करना पड़ा हाउस मेंबर्स को. Now whether they're boys or the fathers or the husbands or brothers, सबको हिल के कुछ ना कुछ तो करना पड़ा अपना. इसी वजह से all the males were waiting कि कब खुलेगा हम वापस जाएं ऑफिस. हम डे रूटीन में we are a lot more, you know, relying on our helpers, maids. पर ये हमें पैंडेमिक में पता चला कि हम कितने used to हो गए होंगे. लेकिन खैर there were many difficulties, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें पैंडेमिक और जैसे time things are changing, you know, dynamics are changing, so people are growing mentally, especially mental growth बहुत जरूरी होती है. जो अब हमारे यहाँ हम देख सकते हैं slowly men are understanding women and women are trying to understand best to their level. So ma'am, what are the advantages of being a working woman, as you have already told? So my next question would be like we hardly have time for ourselves, so never mind we are giving time for anyone else. But how can we maintain a healthy, fulfilling and potential relationship with our significant ones, with our family members? I think वही वाली बात आ जाती है कि जो आपका फैमिली टाइम है that becomes your very precious in such a situation. क्योंकि बच्चे दिन में स्कूल होते हैं या स्कूल से रिलेटेड ऑनलाइन या उसमें फंसे होते हैं. Husbands are busy with their work. Whether you're a working woman or a housemaker, you're busy with your own work. But जो आपका family time होता है शाम onwards, how do you gel in that time? What are you bringing to the table? How are you sharing your stories? आप अपनी stories share करें. आप सामने वालों से पूछें how was your day? आप बच्चे से पूछें how was your day? What's happening in their lives? How are their friends doing? How are they faring on their homeworks? Test आने वाला है, where do they stand? You know, there are tons of things, and then you discuss, and then you share your situation also, and see, sometimes children give you some brilliant ideas. Exactly. You know, it's beyond belief because they are fresh. उनकी माइंड की कोई लिमिटेशन नहीं होती है. हमारे माइंड की तो लिमिटेशन होती है कि नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये इस तरह नहीं कर सकते. But the child will give you such an out of the box solution that you know sometimes it is applicable at your in your own work environment also. So the more the family members spend that time in a positive and productive way, I think that's the most important. True. Second.
Okay, ma'am. So we are getting some pretty good questions in the comment section. So I'm gonna take a few from here. So the first question is from Kamal Mahmood that what is the best time management strategy? ये अब स्ट्रैटेजी तो कोई वो नहीं करती, हर एक की अपनी बिल्कुल अपनी एनवायरनमेंट होता बिल्कुल। है. अब जब फॉर एग्जांपल स्कूल्स होते थे जब तो देन आई वुड वेक अप रियली अर्ली इन द मॉर्निंग, नाश्ता बच्चे के साथ करके उसको तैयार करके आई वुड ड्रॉप हर टू स्कूल एंड गो टू माय वर्क. सो आई वुड स्टार्ट अहेड फ्रॉम द अदर्स. When others start at 9:30, I would start at 8:30. That gave me a 1 hour ka stretch to prepare, plan for the remaining for the day. And when by the time my team members would come, I would be ready. I would have already allocated work to them, delegated work to them. So जब वो आते वो आके वो उनको पता होता कि उन्हें क्या करना है और कब तक क्या क्या देना है. That was a different time. अब ये है कि अब because of online classes, I have to make sure that my child is on the computer, connected in time. So मैंने अपने work को थोड़ा सा वो कर दिया टाइम में. अब मैं normal office time पे पहुँचती हूँ, not at 8:30. It doesn't make sense to leave home at this time. I will have breakfast with my child. I'll make sure she's connected. उसको कोई issues तो नहीं आ रहे, and then I get ready and leave. During the work also I keep calling them, WhatsApp calls and everything कि क्या है, सब कुछ सही चल रहा है, we're connected that way कि अच्छा क्लास हो गई नहीं हुई, कुरान पढ़ लिया, कायदा पढ़ लिया, whatever. And then when I but during that time क्या होता है कि जी मैंने ऑफिस खत्म किया, मैं जल्दी घर आ जाती हूँ. At times मैं क्योंकि now work from home is more वो, so if I have any meetings that can be done on Zoom, then I will go a little early. Set up my office at home, my laptop ही connect करके आपने on होना है, and then I do my meeting with from home. So things are different now. Last year things were different. Totally. So और आपकी अपनी situation different होती है. किसी के पास बच्चे नहीं है तो अभी भी वो ये कर सकते हैं कि वो जल्दी जाए, जल्दी खत्म करें, flexi hours में work करें. You can work out, you can take out time for exercise. You can take out time for your family members. So it's all about किसकी क्या situation है उसके लिए. But ये कि थोड़ा सा advance planning कर लें. Don't waste time. Don't sit around wasting time. Although ये बहुत अम्मी वाली चीज़ कही है मैंने, क्योंकि मदर्स जनरली से कि टाइम ज़ाया नहीं करो, उठो, बैठे नहीं रहो, टीवी के आगे बैठे नहीं रहो. Yes, entertainment is also very important. Very important. When do you do that? Do you sit down at 10:30 once your children are in bed? 10:30 to 11:30 you want to watch your shows. With internet, with YouTube, all that is possible. पहले तो आपका 8 से 9 बजे वाला ड्रामा आता था जो आप देखते हैं, exactly. But वही ड्रामे अभी YouTube पे बाद में भी देखे जा सकते हैं. So that, as I said, digitization has made life more flexible, and now things are much more in your control. Although एक नेगेटिव चीज़ ये है कि आप हर वक्त एक्सेसिबल हो जाते हैं. I mean, if anybody couldn't tell WhatsApp, please have a separate dashboard for business and separate for personal. So अगर वो डैशबोर्ड ही अलग हो WhatsApp के अंदर, for example, तो you know how to pick up किसको देखना है. तो I think आपकी पर्सनल टाइम में वो चीज़ को आपको रोकना होता है, क्योंकि कोई और ना भी करे, आप खुद ही कर रहे हो. You have to start learning when to say no. Exactly, that's very important. Say no. कि अभी मैं इधर हूँ, अभी मैं आपको कॉल करूँ. I mean during lockdown एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, my boss who is the MD of the stock exchange, he called me and my little daughter was there and उसकी कोई बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ होगी obviously, और यहाँ बहुत एक सीरियस कॉन्वर्सेशन हो रही थी, and she said mama, and I was talking to him and I told him, listen, you know what, I'm needed here, can I just call you back in the next 10 minutes, 15 minutes? And he said, oh okay. क्योंकि उनको आवाज़ जा रही थी, ये मामा बोल रही है मुझे. And I said, you know what, I think I'm needed here, like right now, can I just call you back in 10-15 minutes if it's all right? And he said, yes, it's all right. So I put it down. I said, yes, Maria, what do you want? And then फिर उन्होंने अपनी कहानी की, अपना कोई भी जो टॉय चाहिए था या क्या चाहिए था वो दिया, मैंने इनको सेटल किया, then I called him back.
So it's up to you, because हम कई मरतबा हमारे बच्चे हमसे बात कर रहे होते हैं और हम सुन नहीं रहे होते बिकॉज हम बहुत बिजी हैं. So कल भी ऐसा हुआ, लिटरली मैं क्लब से निकली तो मेरी छोटी मेरे साथ की गाड़ी में, और मेरे पास एक फ़ोन आया, एंड आई वाज टॉकिंग टू द पर्सन एंड आई सॉ शी वाज सिटिंग इन द नेक्स्ट सीट. मैं उसको सेटिंग तो कर दिया, अभी वो कुछ बात करना चाह रही थी, एंड आई सेड यू नो व्हाट, लेट मी कॉल यू बैक, I'll catch you, I think she needs my attention right now, and the other person understood. So I, you know, आपको खुद बताना होता है सामने वाले को. अगर आपने खुद ही यू नो सामने वाले को बच्चे को आपके इग्नोर कर दिया, और तो then you know it's how you take it forward. You will call back the person when in half an hour. कोई कहीं गाड़ी नहीं निकल रही, किसी की कोई वो मसला नहीं हो रहा, nothing is, yeah, so it's like that. मतलब अगर फोन नहीं होता तो वो आदमी से बात नहीं कर पाता ना. बिल्कुल, आपको खुद ही प्रायोरिटाइज करना पड़ता है. So at times you need to realize that you know these are my children, this is my family comes first. They, I mean at the end of the day yes, आप जॉब भी कर रहे होते हैं, आप अर्न भी कर रहे होते हैं, आप maybe I'm not the primary breadwinner in my family, ठीक है, because generally हमारे culture जैसे होते हैं ना, husbands are the primary breadwinners, but at the same time it is important what I'm bringing to the table, because I'm adding value there, and my job is also very important. But on you know the challenge is कि बच्चे को माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है बाप के मुकाबले में. So वो I think for me that is very important कि okay she needs me. I mean a lot of times मेरी बड़ी बेटी, she's 10 years old, she wants me downstairs with her शाम को, रात को, after dinner. So then I sometimes leave my phone and I just go and sit with her, and we just sit at night ठंडे में, and सिर्फ उससे बात करती हूँ, ना मियाँ से ना दूसरी बच्ची से, because the छोटी वाली takes a lot of time. She needs that time. Sometimes I take her out for dinner, for lunch or breakfast, and it's just me and her mama date, mama-daughter date. So that's also very important. I think sort of strategies. And we have to give importance. फिर कभी मैं छोटी को लेके कहीं चली जाती हूँ अलग से, उसके साथ टाइम गुजारती हूँ. So because every child needs your personal attention. They have their own discussions to do. चाहे वो जितना childish discussion भी हो, 3-year-old का क्या discussion होगा, but for her that's important. Her questions are the most important at that point in her life, and she wants the answers to them. So I think giving that importance is important. It's necessary. I totally agree. And I think ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हो रही होती है. ये रोज होता है, throughout the day आपको ये जगह करना. Everyday struggle. So when I make लंच के टाइम पे कई मरतबा मैं ऑफिस में जब लंच अपना कर रही थी तो what do? I make a WhatsApp call and I ask them, and then I ask them alone what she did, अभी क्या हुआ, अभी कौन कर रही हो, किधर है, दादी है नहीं है, you know like whatever. उसके बाद फिर मैं कहती हूँ छोटी क्या है, उसको दो फोन. वो बहुत ही बेकार बात करती है, मतलब अब 3 साल की बच्ची क्या बात करेगी, वो अपना कोई टॉय दिखाएगी, अपना कोई सैंड का बता रही होती है, अपना कुछ कलरिंग का बता रही थी. And then I ask her, and then you know एक छोटी सी conversation उसके साथ भी होती है, and then you know I say okay now can mama go back to work. अच्छा अभी तक कोविड की वजह से मैं उसको अपने ऑफिस नहीं लाई थी, बट अभी लास्ट वीक I took her to office ताकि वो देखे कि ये when my mother is not there around, where is she and what is she doing. This is her office, this is the people she works with, this is what she does. This is you know a life she has. It's really important to give her that insight, that sneak peek into my professional life, so she can relate to it. And when she's home and I'm not there, she can actually visualize where I am and what I am doing. That I think I try my best to do that and make them part of my professional life also a bit. But I can keep my personal life and career life very. I try to do that very. I'm a firm believer that you know friends, family, that's different. You don't throw your weight around कि जी अच्छा मैं यहाँ ये कर रही होती हूँ और मैं professional, because ऐसी human beings profession designation ये आपको temporary चीजें मिली होती हैं. By virtue, who am I? I am Raeda. I am a mother. I am a wife.
I'm a sister, I'm a member of a family, and I contribute at my office. That is by virtue of my education, या experience जो मुझे designate. But this is not permanent. I'm permanent, not permanent in the really life scheme of things. But you know, एक इंसान का ये एक मेरा role है. This is not me. It should not define me. Yeah. So I think that is very important when you realize that you say, "Acha, now I have to get out of this role and switch on to that mode." So totally. The switching on and off is important. Yeah. It was really an enlightening advice for me as well. Okay, so the next questions. Okay, there are a lot of questions. Okay, Raeda Hussain has a question that during this pandemic, what has been the hardest part as being both a mother and a working lady? Yeah, it's very difficult because आपको घर के environment में बच्चों के आसपास रह के उनकी चीज़ें भी करते रहना, घर का काम भी करते रहना और फिर ऑफिस में भी अलाइव रहना. So उसमें जो डिमार्केशन थी ना काम और लाइफ की, वो ख़त्म हो गई. क्योंकि मेरा काम अगर 5 साढ़े 5 तक कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने लंच ब्रेक थोड़ी सी लंबी ली क्योंकि मुझे खाना भी तैयार भी करना था और खाना भी और खिलाना भी था. तो देन फिर वहाँ बंद करके फिर मैं 8 साढ़े 8 या 9 बजे बैठती वापस. सो 9 से 11 बजे फिर मेरा दफ्तर शुरू होता था. वंस द चिल्ड्रन वुड बी डन विद फूड एंड एवरीथिंग, या 10 बजे से 12 बजे मेरा दफ्तर शुरू हो जाता था. सो इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट डिमार्केटिंग. ऑफिस में तो आप होते ना, आप 5:30 बजे दुकान बंद की, आपने उठ के आप निकल गए. और वो दुकान नहीं बंद होती थी. लिटरली इन पेंडेमिक दैट शॉप वुड नॉट क्लोज एंड योर पर्सनल लाइफ वुड कम एंड परमिएट इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ. अभी मैं सुबह घर से निकलती हूँ तो मैं घर बंद करके निकलती हूँ. So I keep checking, but I'm not there in that environment, and I don't have to attend to it. I have people who help me manage that bit, and I'm off from there. So pandemic में तो आप उधर ही थे उसी environment में, और आपको दोनों तीनों चीजें बहुत मैनेज करनी पड़ी. I saw many women crying like, oh God, अपने बच्चे से बड़े बच्चों को भी देखना पड़ रहा है कि obviously there were no helpers, no maids, and कि even I was at home, तो वही सब चीजें घर एक बिग बॉस की सिचुएशन में हमने तो लिटरली आप यकीन करें, खैर अल्लाह का शुक्र है तो बोलते हैं सर अभी भी काफ़ी काम हमारे हम खुद ही करते हैं. वी नॉट डिपेंडेंट ऑन हेल्पर्स. सो लाइक कपड़े हम खुद ही धोते हैं. ये कुछ चीज़ें हमारी अपनी हैं. बट जो स्टाफ आती है, मेड आती है, वो सफाई करने आती है सुबह, वो नहीं हो रही थी. तो अब यू नो दे हैव देयर ओन वे. बट व्हेन पेंडेमिक हिट तो हमने अपनी वो जो बड़ी वाली ब्रूम स्टिक है और वो प्रॉपर वो वाइपर्स वो लेकर आ गए ताकि गन्ना तो अब है. सो और बाहर निकल आया सारा उस किस्म का अच्छा वाला सामान सफाई के लिए. So we try to switch and do that. कि अच्छा चीज़ें ठीक है, you can't do it like the maid does it, but you do it in your own way. बिल्कुल. क्योंकि सफाई तो होनी है. बिल्कुल, सब चीजें चलनी है. Exactly. So Ulfa has a question that do you think that kids get more benefits like advices and professional guidance and understanding if their mother is a working lady? Definitely. माँ ना सिर्फ रोल मॉडल होती है, माँ एडवाइस दे सकती है हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग देयर फ्रेंड्स. स्कूल के इश्यूज सॉल्व करा सकती हैं. बहुत सारे इमोशनली और जी दोनों एडवाइस मिलते हैं, प्रोफेशनल मिलते हैं. फिर दूसरी चीज़ you can your children think more in a different manner. और वो कभी ये नहीं बोल के बोलेंगे मामा you don't know. जनरली जनरली बच्चे जब बाहर निकलते हैं वो स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हैं. जब माँ बाहर निकलती है तो माँ फिर भी स्मार्ट रहती है. इन दैट वे दे मोर वर्किंग मदर इज मोर काइंड ऑफ ट्यून्ड इनटू व्हाट्स हैपनिंग इन योर सराउंडिंग्स. वरना होता ये है कि बच्चे बाहर निकल रहे हैं बट अ मदर इज नॉट गेटिंग दैट एक्सपोजर. सो एट वन पॉइंट इन टाइम they have more exposure than the mother. But when you're a working mother, उनके इश्यूज जब वो लेकर आते हैं आपके पास, वो बात कर सकते हैं. उन्हें एडवाइस अच्छी मिलती है, बैलेंस एडवाइस मिलती है, निगोशिएट करना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अपना काम में कहीं फंस रहे हैं तो क्या करना. Even things like you're not to be too competitive, be competitive but to an extent that helps you. So working mother can add on to that.
चाइल्ड डेवलपमेंट वाइज बहुत बेहतर हो सकती है। क्योंकि एक और एस्पेक्ट भी इसमें ये है कि अगर वो खातून जो घर में रहती हैं और उनको कोई डिप्रेशन है या कोई और इश्यूज हैं, कुछ होते हैं, आप जब घर में रहते हैं कि इन्वायरमेंट में रहते हैं, टाइम्स यू डोंट हैव अ सोशल लाइफ दैट वे, सो पर्सन लाइक मी समटाइम्स आई थिंक कि मुझे टाइम ही नहीं है डिप्रेस होने का या कुछ सोचने का, मुझे तो इतना चलते रहना है कि आई डोंट हैव दैट फ्लेक्स लग्जरी, आई वुड से। तो फ्रॉम दैट एंगल, इफ यू आर मेंटली हेल्दी, आपका पूरा इन्वायरमेंट मेंटली हेल्दी होता है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम, वो चीज़ या आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है ना आपकी फैमिली लाइफ को इफेक्ट करती है, एंड दैट ऑब्वियसली विल लीड टू द चाइल्ड्स डेवलपमेंट ऑल्सो। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इफ काम अपनी मर्जी से कर रही हैं ख़वातीन, ज़बरदस्ती नहीं भेजा जा रहा उन्हें, और अगर वो काम से खुश भी है। बिल्कुल, और एक्सपोजर भी एक हद तक हर इंसान के जरूरी है, इवन women who are homemakers, उनके लिए भी एक हद तक एक्सपोजर बहुत जरूरी है। They need to get out, they need to have a life of their own, चाहे वो काम करें ना करें, सोशल वर्क करें, ग्रुप में बैठ के कुरान भी पढ़ लें, and discuss things and go out. ये committee party जो होती है, this is also important for women, because if you're not working, you need to get out, see the world, meet people, and this is the way they're meeting their friends. So I think that's also very good, because if a woman is happy, she goes out, she dresses up, you meet people, you interact, and you come back happy. When you're happy, you give out positive vibes to your surrounding, and that's the most important, I would say. And I think if a woman is happy of the house, then she contributes 10 times more than she's contributing usually, I think. Precisely. So the all about the mental health. Yeah. It is as important as the physical health. That's true. Right. So, ma'am, there's another question from Mirab, that insightful learning must be taught to both genders without any biases. Right? Okay, that was a comment. Okay. And Mariba has a question, that how can someone be a successful working mother? And I think that's a question we have already answered. I think success is very subjective. क्या आप सीईओ बन के सक्सेसफुल होते हैं या आप अपने ही रोल में सक्सेसफुल हैं? क्या आपका इट्स योर इंटरनल वो क्या आपके लिए क्या सक्सेस है? ऑपरेशनल डेफिनेशन है सक्सेस, मैटर्स, हर इंसान की अलग-अलग डेफिनेशन। आपके लिए क्या सक्सेसफुल है? क्या बेंचमार्क्स है आपके सक्सेसफुल? सो यस, आई थिंक इट्स वेरी इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, but yes, it's possible. आपके लिए क्या सक्सेस है? Yeah, मेरे लिए I think if my kids are positive contributors, if they're healthy, happy, they're learning, they have some discipline, although I'm not such a strict mother that way, and जिंदगी बहुत छोटी है, आप if you're able to give back to society, if you're happy with what you're producing at work, what you're giving back, what you're bringing what value you're adding to the work, and you feel that I've given my best more than 100%, then I'm a successful person. True. So the very last question from my side, that what one piece of advice would you like to give to our viewers who are watching us right now? Any one message? I would say it's women and men both. पहली बात तो अपने आप को समझें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, because when you are happy, when you know yourself is what we say. अब हम मेडिटेट करें या हम नमाज पढ़ें या ये सारे फॉर्म्स ऑफ नमाज भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है. It gives you time to think, reflect, give time to reflect on what you are, what you want to be, what makes you happy, and what matters actually. And अपने आप को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दें, हमेशा ना खड़े हो जाएं दूसरों की और दूसरों की वजह से अपने आप को चेंज ना करें. Don't follow people
See what is it that makes you happy. आपके अब्बा कहते हैं कि डॉक्टर बनो, क्या आपको डॉक्टर बनना है? Will you be very happy being a doctor, or do you want to be happy? Will it make you happy to make him happy? Yeah. But क्या आप समझते हैं डॉक्टर बन के आप बहुत अच्छा contribute कर सकते हैं? Yes, no. My father wanted me to be a doctor. I did not. I told him, you know what? I think अपना perspective समझाया. उनकी तो शौक था ना, बट उन्होंने जब समझा कि यार मेरे अंदर वो इंक्लिनेशन नहीं है, मैं शायद डॉक्टर अच्छा नहीं बन सकती, मैं बिजनेस पर्सन अच्छी बन सकती हूँ. सो यू नो देन ही वाज फाइन एंड इवेंचुअली माय यंगर ब्रदर बिकेम अ डॉक्टर. सो खानदान में कोई तो डॉक्टर उन्होंने कि ये बन जाएगा डॉक्टर, किसी और को बना लेना, 5 बच्चे हैं आपके. सो यू नो दैट वे अल्लाह का शुक्र है. बट आई रियलाइज एंड आई one positive thing I think my mother and my father both in their own ways inculcated in me was कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, एंड मुझे किसी और को नहीं फॉलो करना, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ. आई हैव टू बी माय ओन. And one needs to recognize your own spark. Exactly. आपको अपना पैशन क्या चीज़ है, क्या your personal professional life, आपको प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है. What you want to be, क्योंकि जब हमारा वो जो एज गैप होता है ना, जो हम मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट एंड व्हाट वी वांट फर्दर इन आवर करियर्स. इवन माय फादर वांटेड टू बी डॉक्टर, क्योंकि वो अच्छे मार्क्स आ रहे थे, सब चीजें, तो वो होता है कि ये कोप अप कर लेगी. बट दिस इज वेयर आई रियलाइज आई डोंट बिलोंग देयर. पढ़ने को तो यहाँ जो पढ़ा इतना अच्छा वहाँ भी पढ़ लेती, लेकिन वही कि यू फील कि आप अपना कंट्रीब्यूट बेस्ट कर सकते हो सोसाइटी में, ठीक है ना. आप वो काम करो जहाँ आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो. अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आप वहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. बी एन आर्टिस्ट. सो इट इज व्हाट recognizing the best of your world. और अपने लिए जो है ना, आप खुद बाउंड्रीज ना खड़ा करें. बिल्कुल. Don't draw boundaries for yourself. So I think it's very important, this reflection and self understanding. Bilkul. So, ma'am, thank you so much for being a part of TBC Talk, and I'm really thankful that you shared your valuable life experience, and even I myself have got many tips, useful tips from you. I'm glad. So, ma'am, and thank you. Here's a small token of appreciation from our team. Thank you very much. You're welcome. So, I hope you guys have liked the show, the live session actually. And now I, Ms. Raeda Latif, would like to sign off, and I hope you must have liked it, and must like have the topic, time management for working mothers. So until next time, thank you and Allah Hafiz.